afternoon, students. Today we are start unit 3 reading comprehensions. Importance of reading, kinds of reading, how to read, what is the reading comprehensions, developing reading habits, model passage. In this unit, after reading this unit, you will be able to understand the different method of readings, understand how to read better, comprehension passage, attempt questions. Purpose of reading. We read for the information, knowledge, and pleasures. When we read for the knowing the score of cricket match or election results, we are reading for the information. When we read for the finding out the rules of cricket and how it is played, we are reading for the knowledge. When we read while traveling or for the passing time, it is a reading for pleasure. रीडिंग रीडिंग मतलब वाचन कौशल। रीडिंग जितना हम पढ़ते हैं उतना ज्यादा हमारा नॉलेज बढ़ता है। रीडिंग एक स्किल है, एक कौशल्य है। इस कौशल्य के आधार पर हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। इफ यू डेवलप द skill of reading, you can enjoy the activity of reading while turning over the pages of books, scanning and dictionaries, or reading a complex. You need to ask a different skills readings. Each reading activity needs a different approach. Kinds of reading. Many kinds of readings: skimming, scanning, reading to study, word by word reading, light reading. Sorry. Kinds of reading. There are many kinds of reading. It situated for the particular occasions. The skills reading is one who various is a reading to shoot. Both the material is and its reason for reading it. First of all, skimming. This is the type of the reading where you just glance together a books. Here you read the handling, name of the chapters, authors and publishers. By doing this, you just want to see whether the book is of your interest or not. It is done when you buy book or you go to the library to borrow a book. Line by line, the page by page reading is not done, it's skimming. Second one, scanning. Here you read page by page, line by line, in order search for the some points or details. Reading to study. Reading to study is the only type of reading which we all know, because that is what we are taught in school. It is a slow and repetitive readings, because the aim here is to study and must master which is being read. Reading is study
may involve several reading and the taking of notes to summarize what he what has been read. Word by word reading. Third one is word by word reading. As the title suggests, it is the slow and word by word reading. It, it is generally used while reading a scientific or mathematically formula. Very complex material. It may also be read to appreciate the full beauty and significance of poem or other piece of. Fourth one is light reading. Light reading is leisure reading. This is the way we read most of the time. A newspaper or the novel is read in this way. Here we are not reading the digested or assess the material, and hence the reading tends to be fast and super financial. Kinds of reading, five kinds of readings. Next, how to read. जब तक हम अलग अलग प्रकार के शब्दों का संग्रह करके उन संग्रहों को आप एक साथ पढ़ते हैं तब वह एक नॉवेल या किताब बन जाता है। जब वह किताब हम एक साथ पढ़ते हैं तो उस अलग अलग शब्दों को एक साथ जोड़ने के बाद उनको एक अर्थ पैदा होता है। उसी प्रकार उसी तरह हम अपना जो वाचन का कौशल्य है वह कौशल्य हम बढ़ा सकते हैं। इस वाचन कौशल्य के आधार पर हम अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। हाउ टू रीड। Read the following two sentences. The sky is blue. It's so fact, dangerous, and P trace are terms which are generally used in law. You could read the first sentence at the glance, but it took several glances for you to read. The second sentence, this is because the words in the first sentence are familiar to you as they are from everyday speech. The word is the second sentence are unfamiliar and not from everyday use, and so you had a glance at it a several times. यहाँ पे दो वाक्य दिए गए हैं। उन दो वाक्यों के आधार पर हमें पहला वाक्य जो है द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है, यह इस वाक्य हम अपनी आसानी से हम वह वाक्य पढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरा जो वाक्य है वह अधिक कठिन है, उसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा। जब वाक्य शब्दों को जोड़कर वाक्य तैयार होता है तो उस वाक्य को एक अलग प्रकार का आधार प्राप्त होता है और वो वाक्य तैयार होके उस वाक्य को एक अर्थ हम उसका वाक्य का अर्थ हम समझ सकते हैं। There are some readers who have to glance several times even at a simple sentences like numbers words. They are slow or inefficient readers. Good readers may read the sentence in one glance, but a slow readers may have a glance 4 or 5 times to read the sentence. This may be because of the law vocabulary.
लो vocabulary and लो। जब हम वाक्य तैयार करते हैं उस वाक्य के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के शब्दों को एकत्रित करके उस वाक्य को हम उस शब्दों को एक वाक्य शब्द के आधार पर हम एक वाक्य तैयार करते हैं और उस वाक्य को हम जब किताब में उसका उपयोग करते हैं तब उस वाक्य को एक प्रकार का अर्थ प्राप्त हो जाता है। This may be because of the low vocabulary and less practice for practice of reading. In order to become a good reader, a student may read at last one page every day. But विद्यार्थियों को रोज एक पेज डेली पढ़ना ही है। जैसे जैसे आप रोज पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपका वाचन कौशल्य विकसित हो जाता है। जिस तरह आप रोज पढ़ते पढ़ते आपका शब्द संग्रह भी बढ़ता है और आपको आसानी भी हो जाती है, उसका प्रैक्टिस हो जाता है। इसीलिए हमें रोज एक पुस्तक को पढ़ना आवश्यक होता है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उस प्रकार उन्हीं वाक्यों का संग्रह हमें वाक्य का संग्रह बढ़ जाता है। What is the reading comprehension? Comprehension means understanding. Comprehension means understanding. जब हम वाक्य पढ़ते हैं, जब हमारा वाचन कौशल्य विकसित हो जाता है, जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि उस वाक्य में वो वाक्य किस प्रकार का है। Reading comprehension means read a passage and understand it in order to check out whether you have understood the pages or passage or not. Some question will be asked to you. You are expected to answer them briefly in order to be able to understand the given passage. You have to read in the meaningful way. Understand the given passage meaningful way. How to read is a meaningful way. How to read a meaningful way. When you read in a meaningful way, it is not expected that you remember every uh, every word or every sentences. But while reading, you should be able to gather to important ideas and be able to put them down in the form of the answer the questions asked. You may follow the following 5 steps to read in the meaningful way. जब हम पढ़ते हैं तब हमारा शब्द संग्रह बढ़ता है और जितना हमारा शब्द संग्रह बढ़ता है उसी प्रकार हमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न हम उपस्थित कर सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं तब हमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। शब्दों के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के शब्द, वाक्य, प्रश्न तैयार कर सकते हैं। You may the following 5 steps are reading in meaningful way. First of all, survey. Make a survey of the given passage. A survey can be made by using the skimming method. Look at the length of the passage. Find out whether the title is given. Also, try to find whether the name of the chapter is given. By doing this survey, you get generally idea of the passage. Make a survey of the given the passage. जब हम कौन सा भी परिच्छेद पढ़ते हैं तब हम वह
सर्वे के आधार पर वह पैसेज तैयार किया जाता है। उसमें कुछ कहानियों का समावेश किया जाता है, अलग अलग प्रकार के उदाहरणों का समावेश किया जाता है, नहीं तो एक प्रकार का प्रसंग उसका भी उसमें समावेश किया जाता है। जब हम वह परिच्छेद पढ़ते हैं तब हमें एक आइडिया आ जाती है कि वह किस आधार पर वह पैसेज तैयार किया गया है, उस पैसेज में क्या क्या समावेश किया गया है, वह पैसेज कौन से आधार पर है, उसमें कौन से विषय का समावेश किया गया है, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। सेकंड वन इज क्वेश्चन। Ask yourself a few questions. What is the passage about? What is the subject matter? Are there any questions? What is its topic sentence? This is a sort of warm-up session before reading. When you ask these questions to yourself, you are preparing your mind for the understanding of the given passage. What is the passage about? वो परिच्छेद कौन से किस आधार पर है? What is it subject matter? उस परिच्छेद में किस विषय का समावेश किया गया है? Are there any questions? उसमें किसी प्रश्न का समावेश किया गया है? ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न उसमें हम उसका उदाहरण तौर पर उस परिच्छेद को हम तैयार कर सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं तब उस परिच्छेद में क्या है, यह क्वेश्चंस, वह प्रश्न हमें पड़ जाते हैं। रीड। Your eagerness to learn to make you a good reader, but while reading, you have to follow the couple of the points. Underline the key sentences and encircle the different words. Do not get discouraged by them. You can guess the message. Guess the meaning of the words with reference to what you are reading. Reference to what you are reading, being able to guess the current meaning of the words is an important skill. This can be developed by reading. जब हम पढ़ते हैं, परिच्छेद का हम अध्ययन करते हैं, कुछ भी परिच्छेद, कुछ भी पुस्तक, किताब, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय हमें क्या करना चाहिए? जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उस महत्वपूर्ण जानकारी को हमें हाईलाइट करना पड़ता है, मतलब उसके नीचे हम अंडरलाइन कर सकते हैं। नहीं तो जो महत्वपूर्ण जो शब्द है, उस शब्द को हमें सर्कल करके हम उसको ध्यान में रख सकते हैं। Fourth one is reread. Now you already know what the passage is about. Engage in kinds of the dialogues with the passage, as if it is a person with whom you are holding a discussion. Make a judgment about what is written. You may or may not agree with what the author has to say. Look at the underlying points and try to establish a relationship with them. Reread. जब परिच्छेद हम पढ़ते हैं, उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, जो महत्वपूर्ण वाक्य है उसको हाईलाइट करते हैं। इसी प्रकार जब वह परिच्छेद हम फिर से दोबारा पढ़ते हैं, तब दोबारा पढ़ते समय हमें पता चलता है कि ऑलरेडी नो व्हाट इज द पैसेज
इज अबाउट, वह परिच्छेद किस आधार पर किया गया है। Review. As the word suggests, you recall and check whatever you have read before reading the passage. You had lots of the question in your mind. Check whether you are able to answer those questions now. If you are able to do that, the comprehension questions given at the end of the passage could easily be answered. Review. सारांश। उस परिच्छेद में, परिच्छेद हम जब पढ़ते हैं उसको हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उस आधार पर हमें यह पता चलता है कि वह परिच्छेद किस आधार पर, उसका मजेदार अर्थ जो है उसका समराइजेशन हम कर सकते हैं। Attempting the questions and on comprehension. The comprehension question is a compulsory one. It carries more marks, but there is one good thing about a comprehension question. It is a easier and therefore a scoring. The comprehension question is a compulsory one. It carries more marks, but there is one good thing about the comprehension question. It is easier and therefore a scoring. While attempting these questions, you have to keep in mind that about 15 to 20 minutes are enough for the understanding and answering the passage. Answer the question should be brief. Long answers are not expected, and each question carries only 1 or 2 marks. Answer should be, the point is simple language. Avoid the copying sentence from the passage. Attempt the question and comprehension. जब हम परिच्छेद जब पढ़ते हैं उस परिच्छेद के आधार पर हमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। जब हमें प्रश्न दिए जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उस पैसेज को, परिच्छेद को हमें ठीक तरह से पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें उस आधार पर, उस पैसेज के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों के उत्तर, उसका जो सारांश उत्तर है उस सारांश उत्तर को हमें लिखना चाहिए। हमें उत्तर सिर्फ सारांश के आधार पर, आपको क्या समझ में आया उस पैसेज में, उस आधार पर हमें उसका उत्तर लिखना आवश्यक रहता है। लाइन बाय लाइन ऐसा हमें उत्तर नहीं लिखना। एज इट इज हमें जो लाइन लिखी है पैसेज में, जो लाइन है उस लाइन को उत्तर के रूप में हमें नहीं लिखना, हमें उसका एक सारांश बनाकर उसे हमें लिखना होता है। नेक्स्ट, डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स. If you are following the set course of study, there will be certainly be a few books which need close reading. In addition to this, there will be probably be a list of the recommended books. By method of the skimming and scanning, reading habits can be developed. A textbook has to be read very carefully, but the reference book may be read only for the particular information and knowledge. Reading habits may be developed first by reading something that is a short
and interesting, and then gradually shifting one on the difficult passage. By now, you know a comprehension means understanding. In an examinations, the examiners give, gives you a piece to comprehend. He gives you the passage and state a few questions on it. Your answers to the question show to the examiner whether you have understood the passage or not. Comprehension views develops and shows your power of understanding or grasping the meaning of the passage. Developing reading habits. हमें हमारी जो आदत रहती है, पढ़ने की जो आदत है, वह हमें डेवलप करनी होगी, इसको बढ़ावा देना होगा। तब हमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्रकार के चीजों को हमें बारकावे से देखना होता है। जब हम पैसेज पढ़ के उस आधार पर उसका सारांश निकालते हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तब हमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होने आवश्यक है। वह क्या है, उसका अंडरस्टैंडिंग, मतलब वह पैसेज किस आधार पर है, उसे समझना बहुत ही आवश्यक है। अलग अलग प्रकार का समझने के बाद हमें उस प्रश्न को किस प्रकार हमें उसका उत्तर लिखना है, वह भी आदत हमें आनी बहुत आवश्यक होती है। उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार की हिंट्स का उपयोग हम कर सकते हैं। When you proceed to comprehend a passage, try to find out if the examiner has respected a word or two from the passage in the question. This will be keywords and they will be guide you to your answer. The question may or not follow the sequence of the thoughts in the passage. हमें क्या करना चाहिए? जो रिपीटेड वर्ड है, जो बार बार शब्द आते हैं, उन शब्दों को हमें हाईलाइट करना है, और वह शब्द क्या है, किस आधार पर है, उसे हमें कीवर्ड्स तैयार करने चाहिए, और उस आधार पर हमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हम खुद तैयार कर सकते हैं। It is better to given your answer in your own words, but occasionally you can borrow the words from the passage. Your answer should be completed sentence. It is not necessary to repeat the question in your answer book, only quite the number of the question. It is not necessary to repeat the question in your answer book, only quite the number of the question. Next, model passage. Now let us do a comprehension exercise. Read the following passage and see how two questions are answered. Who are you, young man? Who are you, young man? Drawn asked. And who is your teacher? Surely your teacher must be great guru to have trained such a mighty warrior. I am Eklavya. I am Eklavya, sir. The youth answered, my family belongs to the Nishada tribe and we live in the forest.
My teacher is the great and incom incomparable Ron. Ron was surprised. Ron was surprised. Drawn. He repeated, looking upon the meaning by a big wild beast, but drawn live in a Hastinapur. प्रश्न में यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए, उस प्रश्न में अलग अलग प्रकार का एक शब्द बार बार उसमें रिपीट होता है। उस रिपीट होने के बाद वह प्रश्न क्या होता है, हाईलाइट होता है, बार बार वह शब्द हमें दिखाई देता है। ड्रॉन वॉज सरप्राइज, ड्रॉन looking upon the meaning boy divides, but the drawn live in Hastinapur. Drawn live in Hastinapur. Drona live in Hastinapur. Drona. ड्रोना यह शब्द यहाँ बार बार रिपीट हुआ है। ड्रोना लिव इन हस्तिनापुर। ड्रोना कहाँ रहता है, हस्तिनापुर। He knows no Eklavya. Drona had forgotten the incident that had taken place in the place garden. Then Eklavya told him how he had made a clay image of the teacher and looking upon it as a living in Drona. Had said before it in a prayer and the parties the material art in it is living presence. So he does not know it. Drona is truth my guru. Drona is truth my guru. What did Drona ask Eklavya? Drona asked Eklavya who he was and who his teacher. Drona asked Eklavya. What did Drona ask Eklavya? Drona asked Eklavya who he was and who his teacher. एकलव्य कौन है और उसका गुरु कौन है? To which tree did Eklavya's family belongs? Who was his guru? Eklavya's family belongs to the Nishada tribe, and Drona was his guru. Who is guru? Who is guru? Drona was his guru. Why was Drona surprised? Drona was surprised because he had not known Eklavya as he lived in a Hastinapur. Yet Eklavya cancelled him his guru. Yet Eklavya called him his guru. एकलव्य की कहानी बताई है। उस एकलव्य की कहानी में वह एकलव्य इंद्रधनुष के आधार धनुष्य बाण के उन्होंने द्रोणाचार्य की तस्वीर के सामने रखकर अपनी विद्या को उन्होंने प्राप्त किया था। उसके लिए द्रोणाचार्य उसके सामने नहीं थे, लेकिन द्रोणाचार्य को गुरु का स्थान देकर उसने अपनी विद्या प्राप्त की थी। Why was Drona surprised? Drona was surprised because he had not known Eklavya as he lived in Hastinapur. Yet Eklavya called him his guru. Fourth question. How did Eklavya practice the martial art? How did Eklavya practice the martial art? Eklavya made a clay image of the Drona and practical the martial art before it.
द्रोणाचार्य का एक पुतला तैयार करके उसने सामने रखा और उसको सामने रखकर गुरु स्थान पर मानकर एकलव्य ने अपनी जो विद्या है वह विद्या उसने मार्टियल आर्ट की विद्या उसने प्राप्त की थी। ये धनुष्य बाण चलाने की विद्या उसने प्राप्त की थी। What quality of the Eklavya do you find in the passage? What quality of Eklavya do you find in passage? We find the following questions of the Eklavya in this passage. First, faith in himself and his guru. Second one is concentrations. Third one is sincerity. Fourth one is hard work. This quality is in Eklavya. Qualities of Eklavya. In this unit, you study the reading as a skill, kinds of the reading and their significance. We have also given your practice in reading passage and comprehension depth. Next lecture, we are starting fourth unit, communication, oral and written. Thank you so much.